खुश तो बहुत हो गए तुम बार्सिलोना फैंस बहुत. Yes, congratulations. Gundogan has been signed officially by Barcelona for 2 years plus an additional year. लेकिन बड़ा पॉइंट क्या है? बड़ा पॉइंट है such a player who's coming off a treble win and has been there, done that in Europe in multiple leagues. आ रहा है on a free transfer and definitely वो मैं नहीं बोलूंगा old है by any stretch of the imagination. He is not someone who relies on his pace anyway. तो ही इज अ फैंटास्टिक ट्रांसफर फॉर बार्सिलोना. फ्री ट्रांसफर्स हुए ना बहुत सारे हुए ओवर द इयर्स एंड विच आर द एब्सोल्यूट बेस्ट वंस हमें रैंक करना है यहाँ पर. और हम टॉप 5 सीरीज ऑफ कोर्स लास्ट 20 इयर्स सीरीज इज बैक, लेकिन टू पुट लास्ट 20 इयर्स के फ्री ट्रांसफर्स इन जस्ट टॉप 5 विल बी लाइक अ क्राइम. तो मैं बोला एक 11 बनाते हैं इंस्टेड, लेकिन लास्ट 20 इयर्स का ही है, ठीक है. लेकिन हाँ, for those of you who are wondering why am I wearing the Indian jersey, भाई Indian football team is playing tonight. हाँ, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, we are having a match against Kuwait in the SAF championship and hopefully we will win that game for sure. लेकिन हाँ, we have to win to top the group. But let's get in. We will definitely go position by position like we always do on Almighty Blues FC. Hit that like button or do not forget to also subscribe if you're not. तो भाई without wasting much time, we'll start with the goalkeeper. भाई goalkeeper shout out आप लोग बोलिए चैट में भाई. I believe that shout out definitely है सबसे difficult position goalkeeper था. I'll be very honest. अगर मेरी मेमोरी यार बहुत खराब है तो आप लोग हेल्प करिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो इन द रीसेंट पास्ट लास्ट 20 इयर्स का तो भाई गोलकीपर मुझे याद नहीं है. इवन आई सर्च फॉर इट, आई डिडंट गेट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट. डोनारुमा कम्स अक्रॉस एज अ फ्री साइनिंग फॉर श्योर पीएसजी के लिए फ्रॉम माय मिलान. हां ठीक है, बट 2 साल बिताया है, काफी अच्छा किया है फॉर हिज इंटरनेशनल टीम फॉर पीएसजी एट टाइम. यस, ही इज वन आई बिलीव ए कपल ऑफ ऑब्वियसली लीग टाइटल्स. इज दैट इनफ? मतलब डोनारुमा हैज ही बीन सो इंपैक्टफुल to give that order कि भाई this is the best free signed goalkeeper in the last 20 years? I would not say so, honestly speaking. तो हम थोड़ा सा स्ट्रेच करें. मैं अपना रूल पहले ही ब्रेक कर रहा हूँ. यहाँ पर हमने तो घंटा आता है भाई, रूल ब्रेक कर रहे हैं. लेकिन हाँ, एक ही रूल ब्रेक करेंगे, बाकी पोजीशन नहीं करेंगे, ठीक है. अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करिए. लेकिन हाँ, मुझे लगता है फॉर गोलकीपर वी माइट स्ट्रेच इट टू अबाउट 2-3 मिलियन, ठीक है. 2-3 मिलियन पाउंड तक हम करेंगे मैक्स, ठीक है, और ज्यादा नहीं. बेसिकली वेरी श्रूड साइनिंग्स इन टर्म्स ऑफ गोलकीपर्स जो बहुत क्वालिटी भी रखते हैं, ठीक है, हु इज हैविंग द बेटर क्वालिटी. सो वी आर गिविंग शाउट आउट्स यहाँ पर और ऑप्शंस है आपके. जो हार्ट मैन सिटी अचीव्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस. रिमाइंड यू, उसको खरीदा था मैन सिटी ने जस्ट 1 मिलियन यूरोस के अंडर फ्रॉम श्रूसबरी. वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग. बट Julio Cesar for people out there who remember, Inter Milan had some fantastic years 2005 और 2010 के बीच में. Some fantastic years. Of course, prime Mourinho was there. That helped as well towards the latter part of it. लेकिन Julio Cesar won Scudettos for fun. Champions League भी जीता है. But was he as impactful or quality-wise was he among the best goalkeepers during that era? That is something we can talk about, but I'm not too sure about it. 2.5 million euros में साइन किया था Flamengo से. And couple of other shout-outs is Jens Lehmann from Dortmund for Arsenal. That's an interesting one for me क्योंकि Arsenal almost won the Champions League लेकिन जीता नहीं है 2006 में, but they did win of course the Premier League in 2004 as well as FA Cup, I think, if I'm not wrong. तो 3.5 मिलियन यूरोज में लिया था Jens Lehmann को डॉर्टमंड से, बट 3.5 मिलियन यूरोज में लिया था इवन वैन डर सार को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फ्रॉम फुलहम. वाओ, एंड दैट आई थिंक स्टैंड्स आउट. तो भाई मैं डालने वाला हूँ वैन डर सार को. इज दैट फेयर एवरीवन? So I am going to be putting Van der Sar. If you're comparing between a Donnarumma, a Joe Hart, a Julio Cesar, a Jens Lehmann or a Van der Sar, in terms of quality, in terms of longevity, in terms of even trophies, bhai Van der Sar stands out. 4 Premier Leagues, Champions League final में he was instrumental against my own club Chelsea, bro. And again a Dutch fan भी हूँ तो कहीं ना कहीं I cannot negate that. लेकिन at what age also वो भी matters and of course the price matters. So I think overall मैं Van der Sar would say that he would be the best goalkeeper in this lineup जो हमने बोला है. लेकिन अगेन गोलकीपर में बहुत समय बिता लिया भाई. लेट्स गो ऑन टू द फुल बैक्स से ज्यादा ऑप्शन है नहीं, क्वाइट ऑब्वियस ऑप्शन है सच में बोले तो. अगेन आप लोग बोले कमेंट्स में अगर मैं मिस कर दिया कोई. आई बिलीव लेफ्ट बैक इज अ गिवन. For sure, left back is a given. It's going to be David Alaba. David Alaba has to be the left back who has to start. I know kahin na kahin he prefers playing center back more than left back, I believe. At least Ancelotti plays him there. लेकिन मुझे लगता है left back, because मैं बात करने वाला center back के बारे में, लेकिन left back में he is the standout. 100% someone who won the Champions League and came to Real Madrid on a free. साथ में आकर वापस से Champions League जीत लिया यार. वापस से सुपर कप, क्लब वर्ल्ड कप, एंड ऑफ कोर्स अभी तो कोपा डेल रे भी जीत लिया. तो आई थिंक डेविड अलाबा इज अ नो ब्रेनर. एंड ऑफ कोर्स वी फॉरगॉट ला लीगा एज वेल इन द फर्स्ट सीजन, राइट. लेकिन हाँ,
तो दैट इज इट। लेकिन उससे पहले लेफ्ट बैक एक और शॉट आउट देना चाहूंगा, क्रिश्चियन फूक्स भाई, फूक्स है उसका प्रोनाउंसिएशन, डोंट गेट इट रॉन्ग। क्रिश्चियन फूक्स फ्रॉम शाल्का केम ऑन अ फ्री to Leicester City, and we all know Leicester made history in 2016 by winning the Premier League, and of course that was a great signing. He also won the FA Cup, by the way. But हाँ, David Alaba stands out. Right back again stand out है, stand out candidate for me. लेकिन shout out to Dani Alves. Of course Dani Alves, prime Dani Alves was in Barcelona, तो मैं इसलिए डाल रहा नहीं उनको, लेकिन he moved on the free from Barca to Juventus first and then Juventus to PSG. But again, like I said, multiple clubs है, लेकिन did he spend enough time in either club? Probably not. PSG में you can say that he won 2 cups as well as 2 league titles. That's good enough. लेकिन again, no disrespect to Liga यार, और was he central to them winning those? मतलब that's the whole point. Versus a Cafu, जो वो मतलब AC Milan side में next level bro, next level. मतलब for me one of the GOAT right backs, you all know it by now. No bias यार AC Milan का, लेकिन really he's one of those legendary right backs ever. Roma में already he had won the Serie A and he had gone to the final of the Coppa Italia, and then he moved to Milan back in 2003 और आकर जीत लिया वापस से Serie A as well as the Champions League in 2007 among others. तो भाई काफू नो ब्रेनर। सेंटर बैक, और बाय द वे मैं टीम बनाने वाला हूं as soon as basically डिफेंस इज डन, मैं बना के डालने वाला स्क्रीन पर। लेकिन सेंटर बैक अब there are about 4 to 5 options, आप लोग भी बोलिएगा। I believe shout out जाता है for sure to a Sol Campbell. Sol Campbell, one of the legendary English centre backs who moved very very controversially भाई from Spurs to Arsenal, North London rivals, लेकिन वो था 2001 में। तो हाँ, 2003 के बाद भी उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है विद आर्सेनल। ऑफ कोर्स द इनविंसिबल सीजन, हु कैन फॉरगेट दैट, apart from again reaching the Champions League final but not winning it, even FA Cup, like I said, cup, football में Arsenal was doing well at the time. But not just that, उसके पहले he has won a couple of trophies, जो होता है 2003 से पहले। तो that is why it's just a shout out, क्योंकि there are people with more credentials और वो अभी तक खेल रहे हैं। That's the funniest part, and that has to be, I think, Thiago Silva. Let's be real. Bias? नहीं यार, come on. Thiago Silva, 35. Age has to be taken into context. At 35, he got a free transfer. PSG के साथ final गए थे in the Champions League, of course, and then he came to Chelsea. Lucky us that we got him. Of course, Lampard ने लाया था, and that was the time when Chelsea were very bad defensively. He came and got us going at the back. Of course, Tuchel coming helped. But bottom line being that Thiago Silva नहीं होता तो शायद ही हम जीते वो चैंपियंस लीग। And I know final में कहीं ना कहीं he came off injured, but the fact is entire campaign was sensational. Thiago Silva by default has to be in the team. Let's be real about it. At that age, अभी भी 3 साल में, तीसरा साल में जो उसका है, he's got the Chelsea player of the year. A very bad season, वो एक लीडर रहा है, one of the few who stood out. ठीक है, तो Thiago Silva, no brainer, of course, a Club World Cup and a UEFA Super Cup as well gets in. But along with that, should we put someone who's won with an okay side a Europa League, a La Liga, or a Spanish Cup, or should we even a Super Cup, in fact, UEFA Super Cup, or should we put someone who actually came from Bundesliga to Premier League and won the Premier League and the Champions League among the Super Cups and the rest? I think I'll go with the latter. और यहाँ पर obviously हम नाम बोल रहे हैं मिरांडा। Yes, मिरांडा जो साइन किए गए थे ब्राजील से to Atletico Madrid on a free, and he won lots of stuff. Remember, it was pretty good for them. Eventually, I think he went elsewhere as well, लेकिन अभी retired है. But Matip, like I said, is still playing. और उन्होंने बहुत अचीव कर लिया. He was essential, crucial in those runs of Liverpool, और बहुत ही underrated signing थी ये. Of course, on a free from Schalke, Matip of Liverpool, 100% I think has got to be there. So it's got to be Matip, Thiago Silva, Cafu, and David Alaba along with, wow, Van der Sar. That's what a wow backline यार. Okay guys, so this is basically the backline how it's looking. भाई pretty good. I know कहीं ना कहीं मैं formation बोला भी नहीं हूँ what I'm going with. So आप देख ही सकते हो screen पर, I'm going with a 4-4-2 diamond in between. Why, you will get to know. Because generally speaking quite obvious है, हमारे पास ज्यादा wingers नहीं है जो free transfers किए, unless आप लोग बोले chat में. Absolutely. एक winger का shout out देते हो सबसे पहले. Shout out to Mark Albrighton, yes, of Leicester, जिन्होंने जीता था, of course, that historic Premier League as well as FA Cup, but he came from Aston Villa. Is he that level compared to the others जो हम लिखने वाले? Probably not, with all due respect. तो भाई, this is what it is right now. Let's talk about central midfielders. अब 3 central midfielders हम pick करेंगे. Of course, एक will take the CDM position and 2 proper box to box. So whom are we going with? मतलब interesting shout outs है definitely in terms of the central midfielders. One shout out again मैं बोलूंगा यहाँ पर मिलनर को.
James Milner obviously moved from Man City to Liverpool, has won literally a lot of things at Liverpool. By let's be real about it. और by the way मैंने मैटिप का बारे में बोला नहीं था. Obviously I forgot they did win the cups last season against Chelsea, which Milner has won as well, along with Champions League, the Premier League and whatnot. लेकिन again सब एक बार जीता है. However, has he been instrumental? वो एक rotational role खेले थे in almost every competition, more or less. ठीक है, compared to a Matip. तो मैं मिलनर को नहीं डालना चाहूंगा. Shout out है for sure because it was a free transfer and he won lots of stuff और काफी important player थे generally. But was he important as compared to Sami Khedira? Sami Khedira जो आए थे to Juventus from a Real Madrid. You all remember Real Madrid में already success देखकर आए थे Sami Khedira, and coming to Juventus, he kind of helped that midfield for sure. And I believe उन्होंने multiple Scudetto जीते. That dominant period of Juventus, he was very much there in midfield. But again, you can argue that was he the best player in that midfield even? That is the big question. Not sure about that. तो अभी इसको पार करते हैं. और एक और बड़ा शाउट आउट है भाई. Obviously, this goes to Leon Goretzka of Bayern Munich. Yes, काफी criticism झेले in the last season, but in my opinion, it's a little bit harsh. The guy spent 5 years at a young age. He came from Schalke to Bayern Munich on a free और काफी अच्छा किया. He bulked up. You all remember in that COVID season और उन्होंने चैंपियंस लीग जिताया था ऑलमोस्ट. मैं तो बोलता हूँ he was so instrumental in the चैंपियंस लीग कैंपेन. मुझे एकदम याद है कल जैसे. बट साथ में भाई 5 साल में 5 बुंडेसलीगा टाइटल. आई नो बायर्न म्यूनिख में आते तो बाय डिफॉल्ट जीत जाते, बट like PSG, I think Bayern Munich का है, but still you cannot disregard that, right? Plus, of course, DFB Pokal भी है, couple of them. So Goretzka, I think, has been very instrumental. In fact, so I think I'm almost tempted to put him in the team. सच में बोलूँ तो, but again, one of the central midfielders who moved on the free, of course, has to be Andrea Pirlo. हाँ, कहीं ना कहीं मेरी दूसरी क्लब भाई मिलान ने किया था वो क्राइम. Oh my God, 2011 की बात है, and then we thought that Pirlo is aging and whatnot and let him on a free, did not extend him. Pirlo never depended on his pace, bro. कहीं ना कहीं we made a huge error और वहां पर यूवेंटस जाते ही यूवेंटस का जो डोमिनेंट जो पीरियड शुरू हुआ था ना वो हुआ था with Pirlo going in. That was the difference maker. So without a shadow of a doubt, directly Pirlo in the team. Andrea Pirlo, what a free kick taker, and I think if I'm not wrong, was Serie A Player of the Year भी मिले थे भाई for a couple of seasons. Wow, so he has to be there. Who would take those 2 more spots? मैं बोलूँगा one definitely मैं बोलता हूँ Michael Ballack. Come on, Michael Ballack. Everyone knows that free transfer and of course respect to Michael Ballack भाई. जो मैंने सबसे पहले ब्लॉग लिखना शुरू किया था भाई, he was one of them who had supported it. But not just for that, not just because he's a Chelsea player, but let's be real. Mid 2000s में if you're talking about midfielders, Michael Ballack was one of the best in the world. Period. हाँ ठीक है, और कोई ही नहीं. Very unfortunate that he missed that 2010 World Cup later on. लेकिन भाई काफी अच्छा किया था जनरली. बट अगेन कमिंग फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, आयरॉनिकली हमने बायर्न म्यूनिख को बीट किया था इन द चैंपियंस लीग. आई रिमेंबर 2005 इट वाज इन नॉकआउट्स एंड देन माइकल बैलक केम टू चेल्सी और चेल्सी में भाई ही टुक अ रेस्ट्रेन रोल, नॉट रियली कैम बट ही टुक अ प्रॉपर सेंट्रल मिडफील्डर रोल एंड परफॉर्म्ड हाउ भाई सुपर परफॉर्मेंसेस, एब्सोल्युटली सुपर परफॉर्मेंसेस. 2006 समर में आए थे and he went on to win multiple FA Cups. Of course that Premier League 2010 का who can forget, and of course कहीं ना कहीं let's be real 2008 और 2009 में either of them Champions League हमें जीतना चाहिए था. It was final and semi-final and we all know what happened in 2009 semi-finals. Let's be real about it. Michael Ballack आपको याद है along with Didier Drogba. It's a disgrace bro, it's a disgrace with all due respect. लेकिन हाँ भाई it is going to be Michael Ballack 100% होगा यार. Come on, let's be real about it. इतना essential part of the team. But again, हम शायद एक बंदे को भूल रहे and that is Cambiaso. Cambiaso, I think probably gets in as well. Would you say that? I think I probably do. Cambiaso is definitely right up there. पता नहीं आप लोग बोले Cambiaso again. आप लोग अच्छा context तो दे दे भाई. Cambiaso moved from Real Madrid to Inter Milan on a free after just a couple of seasons. और Inter Milan में अपना जमा लिया पूरा, ठीक है, मिडफील्ड में 5 back-to-back Scudettos, Champions League and Copa Italia अलग, and he was there very much playing that 2010 Champions League final. So Cambiaso has to be there. He played almost a decade if I'm not wrong. Wow. लेकिन Cambiaso gets in for sure. So मेरा मिडफील्ड लग रहा है Pirlo, Ballack और Cambiaso. आप लोगों का क्या बोलिएगा in the comment section. अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आपको disappointment झेलना पड़ेगा because the website I'm using for whatever reason does not have a Cambiaso. So let's assume कि it's Cambiaso not Goretzka. ठीक है? It's Cambiaso not Goretzka हो गया. Not Goretzka. तो Goretzka नहीं है. Goretzka is basically a super sub. ठीक है? लेकिन मेरे ख्याल से बहुत क्लोज है. That's why I'm putting him there. But लेकिन Cambiaso is what it is because वो वेबसाइट दिखा नहीं रहा है. It is Cambiaso left central midfielder for sure with Pirlo playing that deep lying playmaker role with Ballack being a box to box.
What a brilliant, midfield that. By camp position, no discussion. Is there a discussion? Free में anyone? By the best cam in the history of football. You can argue अब तो, लेकिन हाँ, someone who started as a right winger. We all know we are talking about Lionel Messi. Yes, आप लोग बोल रहे हो भाई Lionel Messi, Barcelona or PSG 2021. I know the way that he left wasn't too great for Barca fans, but it is what it is. It was a free transfer. And Lionel Messi moves on a free transfer. The kind of quality he brings आपके football pitch पर भाई hardly anyone brings. Let's be real, that has got to be there. ठीक है, तो Lionel Messi को डाल देते हैं. लेकिन for people questioning that, हाँ, कहीं ना कहीं 2 league titles in France is not enough. He probably should have won the Champions League. You can argue there. और वो भी पहले सीजन में he didn't have a great season. वो भी you can argue. But भाई second season में he got FIFA's best player etc. भाई तो कहीं ना कहीं PSG का भी I know मेन भी अर्जेंटीना का PSG में थे. And I think the stats of 2 seasons, 75 appearances, 32 goals and 35 assists. बाप रे. Basically every match on average he's got a goal or an assist. That's sensational numbers. You cannot go against that. और वो भी on the eye आप देख रहे हो तो आपको पता ही है क्या खेला है, especially in the second season, Lionel Messi for PSG. तो going with him again, आप लोग अगर better options बोल सकते हो, I'll take it. We could have gone like a 4-3-3 also, लेकिन मुझे लगता है that wide forward ज्यादा है नहीं जो free transfers में आए थे. तो I think Lionel Messi is that free guy who kind of moves wide centrally. I think it's brilliant. हाँ, अब आते हैं आपके स्ट्राइकर्स में. 2 स्ट्राइकर्स, अब वहां पर ऑप्शंस है भाई, काफी ऑप्शंस है. ऑफ कोर्स इब्राहिमोविच फ्री ट्रांसफर का बेसिकली एक एम्बेसडर है भाई वो तो. यू ऑल रिमेंबर इब्राहिमोविच ऑब्वियसली मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. वो एक बड़ा ट्रांसफर था, मूविंग फ्रॉम PSG, बट ऑन अ फ्री ट्रांसफर ही वन देम आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स 2 trophies you can argue along with Jose Mourinho, and that was of course the League Cup as well as the Europa League. लेकिन Europa League, League Cup, okay, और second season में क्या किया for Manchester United, okay, let's park it there. लेकिन not just that, he did for AC Milan as well. Remember भाई Scudetto जीते, coming back भाई, what a comeback after 10 years again winning for AC Milan. लेकिन was he throughout the season active? Not as much. So again multiple years वाला, multiple clubs वाला हो गया. I don't think it was as effective in a single club for multiple years, and that is why shout out here unfortunately. As much as I love Ibrahimovic by the way, एक और person I love bro, Didier Drogba. Surprised? Yes, the second coming of Didier Drogba to Chelsea. That was obviously 2015 में जब वो आए थे Galatasaray से, और Galatasaray, thank you, that's all I can say, because that was a time when we thought that we needed some experience, और हमने जाने दिया था एटू को, आई रिमेंबर, टू एवर्टन, एंड दैट वाज अ ग्रेट मूव. मुझे पहले लगा था, थोड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ था, गेटिंग लाइक अ लेजेंड लाइक ड्रॉगबा बैक, इज इट राइट? बट नो, आई थिंक ही वाजंट द प्लेयर दैट ही प्रीवियसली वाज. लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था एज अ सुपर सब, एज वेल एज कवर फॉर द मेन स्ट्राइकर ऑफ कोर्स डिएगो कोस्टा. बट नॉट जस्ट दैट, इवन इन द ड्रेसिंग रूम हमने जीता एक लीग कप एज वेल एज द प्रीमियर लीग. ब्रिलियंट शाउट आउट. लेकिन शाउट आउट ये, बिकॉज लेट्स बी रियल, क्वालिटी 2015 वाला ड्रॉगबा नहीं था 2010 और 12 वाला ड्रॉगबा, जस्ट एक, ठीक है. और एक और शाउट आउट मैं देना चाहता हूँ टू फर्नांडो लोरेंटे. लोरेंटे भाई एथलेटिक बिल्बाओ से मूव किए थे टू यूवेंटस, and remember he played a Champions League final with Juventus. In fact he won more than a couple of Scudettos as well. लेकिन was he instrumental, the main guy behind it? पता नहीं, I'm not too sure about it. तो अभी पार्क करके रखते हैं. You can argue there. तो मैं पार्क कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ. किससे आर्ग्यू कर रहे हैं भाई? People remember 2004-2006 Barcelona got a striker on a free, and that was from Celtic, Henrik Larsson. What an impact भाई, बंदे का क्या impact था. I think that stands out bro. Henrik Larsson from Celtic came out. I know कहीं ना कहीं इंजरी हुए थे उन्हें 2 साल के लिए, लेकिन eventually he won 2 La Liga titles plus the Champions League, and in that Champions League final against Arsenal उन्होंने दोनों असिस्ट लिया था यार. तो I think Henrik Larsson had an impact more compared to Llorente single-handedly. I don't know. I think ज़्यादा impact मुझे लगता है Henrik Larsson. Again, I was a Henrik Larsson fan कहीं ना कहीं deep down, लेकिन I genuinely believe that he was the better quality player compared to Llorente. Different players, लेकिन Henrik Larsson को डालूंगा मैं. हाँ, the final position, talk about Barcelona, current Barcelona player, but who used to play for Bayern Munich, of course, Robert Lewandowski bro. जो Bayern Munich literally daylight robbery करती है हर एक विंडो में, एक फ्री में लेती है बंदा from Dortmund. वो हुआ था of course after बेचारे ने मिस किया था to win a Champions League final with Dortmund. That was really heartbreaking for Dortmund fans, लेकिन उसने Dortmund के लिए बहुत किया है, बट बायर्न म्यूनिख के लिए और भी किया है भाई. बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक बुंडेसलीगा टाइटल्स, एंड ऑफ कोर्स दैट एल्यूसिव
चैंपियंस लीग जो उसने जीता था 2020 में, क्या खेला था भाई कोविड ईयर में। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट डीएबी पोकास तो है ही, तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट लेवेंडोव्स्की हैज टू बी देयर। तो आई थिंक वी आर डन। कैप्टन बता दीजिए कौन होना चाहिए। एब्सोल्युटली देयर आर क्वाइट अ फ्यू लीडर्स यहाँ पर, सच में बोलो तो क्वाइट अ फ्यू लीडर्स फॉर श्योर। लेकिन हाँ, दिस इज फॉर नाउ। We will always be coming back daily on both the channels. Always for all to see. Love you all. It is Almighty Blues FC. Bye.